Yes. So, good morning, all of you, once again. So, we are going to discuss now a very small concept from chemical bonding, that is resonance. Now, this concept we will be discussing in detail in organic chemistry. Rather, in organic chemistry, it has a lot of uses. Now, this concept was given to explain the stability of molecules. Give to explain the stability of molecule. Okay, resonance का मीनिंग ऐसा है, मीनिंग आई डोंट नो, बट इन केमिस्ट्री वी कॉल इट एज अ delocalization बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. इसका डिटेल में जैसे मैंने बताया ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे उसके बारे में. ओके, सो राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस. Definition of resonance. Delocalization. It is the phenomena. Hold on, एक minute. हाँ, रेजोनेंस. रेजोनेंस डेफिनेशन लिखो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे. रेजोनेंस इज अ वे, resonance is a way of describing resonance is a way of describing bonding in certain molecules. Resonance is a way of describing bonding in certain molecule. Bonding in certain molecules or ions by the combination of several contributing structures contributing structures okay, which are also known as which are also known as resonance structures or canonical structures. Canonical structures.
Okay. In valence bond theory, in PBT. Okay. Now, why this arises? For certain molecules, I'll give you example, don't worry. For certain molecules, it is not possible. It is not possible to explain. It is not possible to explain the all properties, all properties with the help of single structure. Single structure. Okay. So more than one structure, more than one structures are required to explain, more than one structures are required to explain all properties of molecules. All properties of molecules. And actual structure is in between the structure, in between these all structures. Okay, in between these all structures. All structures. Okay. Now remember that these structures are called as resonating structures, and actual structure is called the resonance hybrid structure. Example देखो. Example 1. This is the famous example. ये सबको पता है? क्या है ये बोलो जरा. What is this? Tell me. बेंजीन. बेंजीन. करेक्ट. अभी बेंजीन में मुझे कितने बॉन्ड दिख रहे? 3 पाई बॉन्ड दिख रहे. सो अगर 3 पाई बॉन्ड है, मतलब it must have a characteristics of alkenes. But some of the properties of alkenes are not seen by the structure. ओके वो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जब हम लोग ऑर्गेनिक में एक्चुअली चालू करेंगे ना, तो रेजोनेंस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. तो बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है, केक्युले करके एक साइंटिस्ट है, केक्युले. उसने बताया बेंजीन का स्ट्रक्चर ये फिक्स स्ट्रक्चर है ही नहीं. उसने बताया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ना ऐसे भी हो सकता है. नाउ दिस इज समथिंग शॉकिंग. नाउ स्ट्रक्चर 1 and structure 2 both are the structures of benzene. हाँ ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ. Structure 1 and structure 2 both are structures of benzene, but none of the structure is a real structure of benzene. What I said? Structure 1 and structure 2 both are the structures of benzene,
but none of the structures is the true structure of benzene. So what is the real structure of benzene? The real structure, the actual structure, which is called the resonance hybrid structure of benzene, is like this way. Understood? Now look at carefully. ध्यान से देखना. इसको बोलते हैं resonance hybrid structure. So ये तीनों स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया कि ये रियल स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है. सो अगर समझो मैंने ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया बेंजीन का, जस्ट लुक एट हियर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. तो ऐसे है साइक्लोहेक्सेन रिंग, ओके, और उसमें जो p ऑर्बिटल्स है वो p ऑर्बिटल्स ऐसे है. हाँ, ये देखो ऐसे है. और मैंने क्या बताया अभी लास्ट कल के लेक्चर में बताया था, pi bond is formed because of the lateral overlapping of p orbital. ये लास्ट टाइम बताया था ना, यस और नो? तो इसका मतलब ये दोनों में अगर lateral overlapping हो गया ऐसे इधर, तो ये एक pi bond बन गया. अभी ये दोनों में अगर lateral overlapping हो गया तो ये दूसरा pi bond बन गया. ये दोनों में अगर lateral overlapping हो गया तो ये भी क्या है, pi bond बन गया. बराबर है. Now if I draw another structure of benzene, many shocking things you are going to discuss in 11th standard science. Okay, जो तुम लोग का 10th standard तक का साइंस था ना, उसको बहुत सारे चीजें. So obviously science is always evolving, remember that. That is the beauty of science. Okay. साइंस में कभी कुछ फिक्स नहीं होता है. And now whatever we know may not exist after 100 years. Okay, so science is always evolving. तो ये उसका ही एक पार्ट है. ऐसे होगा ऐसे. ओके, अभी देखो यहाँ पे लैटरल ओवरलैपिंग इसका होगा, बाद में ये दोनों का होगा, और बाद में ये दोनों का होगा. So can you see the pi bond? इसका मतलब if I able to draw the structure of benzene, so there is a cyclohexane ring and these pi electrons are actually moving around this chain ring. मतलब pi electrons ऊपर भी रहेंगे नीचे भी रहेंगे. So this is called as delocalized pi electrons. Delocalized pi electrons. समझ में आया? जहां जहां पे कॉन्जुगेशन का मतलब समझो. कॉन्जुगेशन का मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. देखो यहाँ पे है क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 है ना. कॉन्जुगेशन में conjugation of pi electrons or conjugation of lone pair of electrons with pi electrons or conjugation of negative ion with a pi electron, positive ion with a pi electron, वहां पे रेजोनेंस होगा. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? रेजोनेंस का कंसेप्ट समझ में आया? तो स्ट्रक्चर 1 and 2 are canonical structures, are resonance structures. While structure 3, this is your structure 3. Structure 3 is called as resonance hybrid. Resonance hybrid structure. अच्छा, तो उससे हुआ क्या ये देखो, ध्यान से देखना. यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे
और यहाँ पे वो सिंगल बॉन्ड बन गया। ये स्ट्रक्चर में ये जो सिंगल बॉन्ड है ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। इसका मतलब ईच कार्बन कार्बन बॉन्ड, ईच कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन हैज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसको उसमें डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड का भी कैरेक्टरिस्टिक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, देयरफॉर ईच कार्बन कार्बन बॉन्ड in benzene has partial double bond characteristics. Characters. Understood? Please note down all this part. अगर किसी को डाउट है तो पूछो, हम लोग और एक एग्जांपल्स लेंगे, डोंट वरी। सर वीबीटी क्या है? अरे वैलेंस बॉन्ड थियरी, ये पढ़ा हम लोगों ने कल, पढ़ा ना? हाँ सर। हाँ।
Yes, done. Everybody done? Draw करके हो गया? Yes, sir. Okay. So now let us go ahead and let us understand one term called as bond order. Okay. Bond order. What do you mean by bond order? Bond order is nothing but number of bonds. Number of bonds between two atoms. Number of bonds between two atoms. Okay. So as the number of bonds increases between the two atoms, the force of attraction between the two atoms also increases. Okay. तो मैं ऐसे लिखता हूं bond order is directly proportional to number of bonds between two atoms and because of that is directly proportional to force of attraction between two atoms और जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होता है बढ़ जाता है सो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड भी क्या होगा बढ़ेगा यस तो सर अभी ये रेजोनेंस के बीच में ये क्यों आया एक बताता हूं जस्ट नाउ जस्ट लुक एट हियर बेंजीन में अगर तुम लोगों ने देखा यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर तक का कंसेप्ट एक्सप्लेन करूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए 1 now in another structure if I consider this structure then इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 और अभी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1 इसका मतलब क्या हो गया which means here the bond order is not perfectly 1 or perfectly 2 it is in between these 1 and 2 right therefore we call it as what partial bond तो कितना होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताता हूं how will you determine bond order bond order is equal to 1 plus number of pi bonds in the structure divided by number of sigma bonds. अच्छा सिग्मा बॉन्ड्स कौन से लेने हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे वही अभी अगर बेंजीन के इसमें में कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा देखो सो बॉन्ड ऑर्डर in benzene is equal to 1 plus how many pi bonds are there 1 2 3 there are 3 pi bonds and how many sigma bonds carbon carbon लेने CH bond नहीं लेने क्यों नहीं लेने because CH bond resonance में involved नहीं है so sigma bond which are involved in a resonance बस वही लेने हैं so कितने हैं वो 6 तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5 अंडरस्टूड यस सो बॉन्ड ऑर्डर मतलब इसका मतलब 1.5 व्हाट डू यू मीन बाय दैट इसका मतलब ये ईच बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन इज नॉट नाइदर सिंगल बॉन्ड नॉर डबल बॉन्ड अंडरस्टूड
Please note down this part. Okay. अच्छा ये फॉर्मूला ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, यू विल फाइंड वेरियस फॉर्मूलाज इन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स। एक फॉर्मूला और मैं दे के रखता हूँ तुम लोग को। और मतलब मुझे ये फॉर्मूला याद रहने में सिंपल लगा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला याद रखा। दूसरा फॉर्मूला भी बता देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, चलो डन, एवरीबॉडी डन। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। यस, कौन एब्सेंट है? हु इज एब्सेंट टुडे? एक कोई तो एब्सेंट है आज। योगिता,
ओके, चलो फाइन, देखता हूँ मैं. Let us understand the carbonate now. CO3 2 minus. Okay. So what is the structure of carbonate ion? हम लोगों ने देखा था, लुईस स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने, कैसे ड्रॉ करना है. Everybody know that. कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 on one oxygen and -1 on another oxygen. Correct? And 2 bonds, so they are bonded with double bond O. तो ये समझा ना, ये मैं कैसे इलेक्ट्रॉन ऐड किया टू कंप्लीट द ऑक्टेट. नाउ जस्ट सी रेजोनेंस का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे. दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट्स ओवर हियर सो दैट ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा. तो अभी मुझे एक नया स्ट्रक्चर मिला. कौन सा स्ट्रक्चर है वो? दिस बिकम्स O माइनस. हाँ, एरोज को समझो, तुम लोग को ये एरोज करने हैं. डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज चला गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया ना. रेजोनेंस में ना कभी भी हम लोग को एटम्स को हिलाना नहीं है. वी आर नॉट गोइंग टू मूव एटम्स, वी आर गोइंग टू मूव ओनली इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन कैसे है. लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन. इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन. व्हाट आई सेड, कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन का मतलब ऑल्टरनेट. ओके, अभी देखो, अभी इसके आगे क्या होगा. व्हाट कैन आई से, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट ओवर हियर. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गया. ये हम लोग क्यों कर रहे हैं बाय द वे, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड हियर वी हैव अ डबल बॉन्ड. सो हर एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है. तो व्हाट इज द, ये तीन स्ट्रक्चर और कुछ बना सकते हो स्ट्रक्चर, एनी अदर स्ट्रक्चर. देखो ना, तीनों जगह पे डबल बॉन्ड आया ना. ऐसे देखने का, डबल बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड 3, मतलब हो गए. इसके आगे और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे. जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है. उसको कंसिडर नहीं करना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में. तो इसको डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाना. इसको डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, इसको डॉटेड लाइन से दिखाना. इसको डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक डॉटेड लाइन से दिखाना. टोटल चार्ज कितना है, -2. तो मैं राइट, इट इज -2/3, -2/3, -2/3. बराबर ना. मल्टीप्लाइड बाय 3 करो तो -2 नेट चार्ज आएगा ना. ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस, कितने पाई बॉन्ड है, 1. कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा. सो 3 सिग्मा बॉन्ड. इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, तुम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. और क्या है, व्हाट वाज द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन टू एटम्स इन ऑल द मॉलिक्यूल्स. सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब रेजोनेट होने वाले बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं. सो 1 ही है ना, एक ही पाई बॉन्ड है. और ऐसे कितने स्ट्रक्चर बने, 3 स्ट्रक्चर बने, राइट. सो नहीं, टोटल 4 बॉन्ड्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स है. कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, 3. सो मैं क्या लिखूंगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 4/3. 4/3 इज नथिंग बट व्हाट,
कितना होता है 1.8। सो आइदर ये यूज करो ये यूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो अभी मैं तुम लोग को आई एम गोइंग टू आस्क यू to draw resonance structure for PO4 3 minus and also determine the bond order. Then ClO4 ClO4 minus, ClO4 minus, then SO4 2 minus. Okay, चलो ड्रॉ करो। किसी को किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। सर ये नहीं समझा। आई होप इसमें डिफिकल्ट कुछ है नहीं बाय द वे। हाँ, ऑर्गेनिक में थोड़ा डिफिकल्टीज आते हैं बट इधर डिफिकल्टी नहीं है। क्या करो। साहेब झोपायला।
So I'm correct. Very good. Yes, Vedant. Yes. Am I correct? Atharva. Yes, Atharva, correct. Atharva, correct. Vedant. Navalkar, correct. सर्व काजवे करेक्ट. सब लोग करो. प्रतीक, do it. Yes, Kamudi, correct. Yes, second also correct. Yes, Atharva Kazve, correct. Ishan, correct. Very good. Acha, everybody is writing the structure, na? Yes, Medhraj, correct. Yes, Vedant Navalkar, correct. Pushkar, correct.
Yes. So I think almost everybody got the answer. Anybody is there who is not getting it? Sanskar, I am not getting answer from you. Vidhi, answer. Chavi, I haven't got the answer. Mrunmayee, Mrunmayee कुठे आहे? Mrunmayee, अरे आज Mrunmayee absent है. Yogita, answer. So just cross check your answer. Huh? PO4 3 minus. So how to draw the structure? O minus 3 है. So negative charge is present on oxygen. So first negative charge. Octet complete किया मैंने. इसका octet complete किया मैंने. इसका octet complete किया मैंने. इसका भी octet complete किया मैंने. बराबर? तो ये बॉन्ड इधर आएगा, तो ये बॉन्ड इधर चला गया. डू दी एरोज. एरोज करो, समझ में आएगा. ओके. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? O माइनस. कहाँ पे आएगा? Here also we have a O minus, double bond O and O minus. Okay. उसके बाद next structure क्या होगा? This shifts over here, तो ये इधर जाएगा, है ना? So we have a structure. Now to show resonance structure, canonical structure, we are putting this arrow, double-headed arrow. Okay, so we have a O, double bond P. Here we have a O minus. Then we have a O minus here, and here also O minus. Right? Now this shifts over here. ये इधर जाएगा. So what will be the structure we have? O minus. Then P, O minus, O minus, and double bond O. Okay, so what is the resonance hybrid structure? P, right? O. So char oxygen. This has a double bond characteristic. This is also double bond characteristic. This is also double bond characteristic. What should be the structure? Minus 4 by 3. No, minus 3 by 4. Minus 3 by 4. Minus 3 by 4. Correct. What should be the bond order? Bond order 1 plus number of pi bond 1, number of sigma bond 4. So here it is 1.25. Yes, everybody got this? Yes, Sanskar? sir. Yes, sir. Pratik? Yes, sir. Okay, Rohan? Good. Atharva Raut? Atharva Raut? Vatsal? नहीं समझा? समझा सर. Okay, good. So ClO4 का कितना आएगा? मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ ClO4 का. अभी सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. हाँ? ClO4 माइनस ClO4. तो एक जगह पे नेगेटिव चार्ज होगा, बाकी सब जगह पे डबल बॉन्ड O होगा. Don't care. Right? And bond order होगा 1 plus 3 pi bond है, 4 sigma bond, तो 1.75 होगा. और लास्ट में SO4 बोला ना मैंने. SO4 कैसे रहेगा? S डबल बॉन्ड हो O माइनस. सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 plus 2 pi bond divided by 4. So ये हो जाएगा 1.5. Yes, very good. Okay. Now अभी हम लोग थोड़ा आगे एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो मैंने बताया था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर योर होल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Okay, that concept is called as hybridization. Okay, before that
हम लोग ये पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और नीड फॉर concept of hybridization, need for concept of hybridization. Okay. What is that need, मतलब क्या है वो? First point, to explain correct valencies, explain correct valencies. Okay, ये क्या मतलब है? देखो, VBT बोलता है, what VBT is saying, during the bond formation, I'll say covalency, I can say, to correct explain covalency. Covalency मतलब number of bonds, covalent bonds formed by an atom. Okay, covalency है, एक ही word है, covalency. So number of bonds formed, covalent bonds formed. So that depends on what? Number of half-filled atomic orbitals involved. So देखो, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, उनका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो है 1s2 2s2, राइट? सो वैलेंस शेल ये हो गया ना, बोरॉन 1s2 2s2 2p1, तो उसमें ये पेयर्ड होगा और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा. कार्बन 1s2 2s2 2p2, तो यहाँ पे ऐसे होगा और 2p2. प्लीज वॉच द वीडियोज, इफ यू डोंट नो ये क्या लिखा है, वॉच द वीडियोज. ओके, तो ये होगा दो अनपेयर्ड, ये है हंट्स रूल के हिसाब से. सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, valencies, covalencies according to VBT, covalencies according to VBT. अभी इसमें देखो, एक भी unpaired electron, there is no unpaired electron over here, so the covalency is 0. Here unpaired electron is 1, so the valency must be 1, and here the valency must be 2, which means beryllium should not form any compound. Boron always form monovalent compound, and carbon always form divalent compound. But if you see the actual valencies, तो ये है ही नहीं. कार्बन के, बोरॉन के, बेरिलियम तो कंपाउंड बनाता है, हाईली रिएक्टिव है वो. और बोरॉन के जितने भी कंपाउंड्स है उसमें ट्राइवैलेंसी होती है. कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स है उसमें मोनोवैलेंसी होती है. मतलब कुछ तो गड़बड़ है. तो क्या गड़बड़ है? तो इसलिए हम लोग कंसिडर करते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जीएस मतलब ग्राउंड स्टेट, तुम लोग पूरा लिखना है इसको. ईएस मतलब एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट ये स्टेप हाइब्रिडाइजेशन में आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेट्स अनपेयर्ड बाय शिफ्टिंग इन द नेक्स्ट वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी. इलेक्ट्रॉन गेट्स शिफ्टेड in the next, an electron gets unpaired by shifting it into the next vacant orbital of same energy. Now language को समझो. Electron gets unpaired by shifting in vacant orbital, next vacant orbital of same energy. Please remember this thing. तो इसका मतलब 1s2 तो 1s2 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2s1 और 2p1. So why 1s1 1s1 ही रहेगा? Because उसका एनर्जी और 2p का एनर्जी डिफरेंट है. 2s और 2p they are from the same shell, same principal quantum number है उनका. इधर भी देखो,
1s2, ये हो जाएगा 2s1 2px1 और 2py1। कार्बन में क्या होगा 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, है ना। तो अभी देखो बेरिलियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है 2। बोरॉन में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है 3। ये 3 है, ये तीसरा भी है। So it must be 2s1। और कार्बन में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है 4। सो एक्चुअल वैलेंसीज क्या है, बेरिलियम का कितना है 2, बोरॉन का कितना है 3, कार्बन का कितना है 4। तो जितने भी कंपाउंड बेरिलियम बोरॉन और कार्बन के हैं दे फाउंड इन दीज वैलेंसीज। सो ये मैं वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। टू एक्सप्लेन दैट वी नीड अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। ओके, पहले ये लिखो। टू एक्सप्लेन correct valencies of beryllium, boron and carbon, VBT is not sufficient। okay, लिखो।
Now, let us understand one more drawback. Let us consider मीथेन का एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं. कार्बन कार्बन का अभी समझो, मैंने वो एक्साइटेड स्टेट कंसिडर किया, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1. so 2s1 मतलब ये होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर हाफ फील्ड हो गया, और ये 3 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैंने ऐसे लिख दी. नाउ इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो, कार्बन मीथेन जब बनेगा बाय कंसीडरिंग दिस कंसेप्ट, जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसे रहेगा, देखो. सो देयर आर 3 p orbitals which are mutually perpendicular to each other, right? और एक है s ऑर्बिटल. मतलब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो, ये है हाइड्रोजन का ओवरलैप, ये है CH बॉन्ड, ये भी है CH बॉन्ड, और ये भी एक, मतलब है इमेजिनेशन बता रहा हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया मीथेन मॉलिक्यूल. तो इस हिसाब से अगर जाए तो इसमें जो 3 CH बॉन्ड है उसका नेचर सेम रहेगा, और जो चौथा CH बॉन्ड है उसका नेचर अलग रहेगा, बिकॉज दिस इज फॉर्म ड्यू टू S ओवरलैपिंग. और ये जो 3 बने हैं, इट दे आर बिकॉज ऑफ वाई SP ओवरलैपिंग. यस और नो? इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ वाई SP ओवरलैपिंग, राइट? तो इसका मतलब ये 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेंगे और ये बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक रहे. डायरेक्शनल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज है, मतलब बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बढ़ेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होता है? बढ़ता है. बट ये कंसेप्ट ही गलत है. सर क्यों? बिकॉज all these 4 CH bond have equal length and almost same bond energy. हाँ, इक्वल नहीं बोल सकता मैं, सिमिलर बॉन्ड एनर्जी. ओके, समझ में आ रहा है? सो अकॉर्डिंग टू VBT अगर मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पे 4 अलग अलग, मतलब 3 बॉन्ड सेम टाइप के, चौथा बॉन्ड अलग अलग. सो यहाँ पे मैं लिखता हूं सेकेंड पॉइंट, दैट इज बॉन्ड इक्विवेलेंस. बॉन्ड इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस का मतलब बॉन्ड लेंथ से, बॉन्ड एनर्जी से. ओके, even the geometry is also not properly explained. So यहाँ पे मैं लिखता हूँ VBT could not explain bond equivalence. ब्रैकेट में लिखता हूं मैं इक्वल बॉन्ड लेंथ, सिमिलर बॉन्ड एनर्जी. Okay, VBT could not explain bond equivalence. Okay, but hybridization could explain that. But hybridization could explain bond equivalence. Is that clear? समझ में आया? तीसरा पॉइंट ये है, VBT could not explain exact geometry and shape of molecule. तो इसीलिए VBT का एक्सटेंशन आता है हाइब्रिड. एक्सटेंशन मैंने क्या बोला है?
hybridization is not a different concept. It is an extension of BBT only. मतलब ये जो कुछ ड्रॉबैक्स है उसको करेक्ट किया गया है. Okay, please note down. Then I will give you the hybrid definition of hybridization. चलो अभी what is hybridization? क्या है hybridization? Write down the definition of hybridization. Okay, actually hybridization वैसे देखा जाए तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है. बायोलॉजिकल कंसेप्ट मतलब फर्स्ट क्या नाम है उसका, ग्रेगर मेंडल, इसने वो हाइब्रिडाइजेशन किया. ओके, पी ग्रीन पीस के ऊपर. सो हाइब्रिडाइजेशन मींस टू और मोर characteristic or things merge in one species. Okay, so similar kind of that, but यहाँ पे hybridization थोड़ा अलग है. हाँ, so it is a process of mixing and recasting of atomic orbitals of same atom of nearly equal energy. Equal energies to form new orbitals with same energy and maximum symmetry. Okay, it is a process of mixing and recasting of atomic orbitals of same atom. Remember this thing, same atom of nearly equal energy to form new orbitals with the same energy and maximum symmetry.
right? First of all, so what are the main postulates, main points of hybridization? हाँ, इसमें और एक चीज मैं बताता हूँ. New orbitals form. New orbitals form are called as hybrid orbitals. Are called as hybrid orbitals. Okay. So what are the main points? अभी इसको एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे उसको? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे. मेन फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अच्छा, कुछ कुछ जगह पे Z है, कुछ कुछ जगह पे S है. सो डिपेंड्स. अगर तुम लोगों ने वर्ड में टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट में, यूएस में वो Z लिखते हैं, ब्रिटिश में S लिखते हैं. मीनिंग दोनों का सेम. नंबर वन, it is hypothetical concept. It is a hypothetical concept. Okay. Second one, number of hybrid orbitals produced is equal to number of pure atomic involved. So मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, number of atomic orbitals involved. Number of atomic orbitals involved in mixing is equal to number of hybrid orbitals formed. Hybrid orbitals formed. Okay. Third point. Hybrid orbitals are identical in shape, size, and energy. ये important point है. Hybrid orbitals are identical in shape, size, and energy. Okay. Fourth सर point. सेकंड पॉइंट समझा नहीं समझा. बताता हूँ. जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, मतलब ऐसा है ना, सी इट इज मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ना. मतलब ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉम ऑफ द सेम एटम. जब मिक्स करेंगे ना, तो उसे एक नहीं बनेगा, उसे दो बनेंगे ऑर्बिटल. समझ रहे हो? तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व रहेंगे, उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. समझ में आ रहा है? अगर वहां पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में इन्वॉल्व है, तो नए ऑर्बिट और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? दो बनेंगे. अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. ओके. नेक्स्ट वन, हाइब्रिड orbitals are represented as so ये है स्मॉल लोब और ये है बिगर लोब. स्मॉल सी ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. ये है नोड अपना, मतलब न्यूक्लियस. ओके. तो इसका मतलब जब भी बॉन्ड बनेगा ना, तो दिस बिगर लोब इज इन्वॉल्व इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन, नॉट द स्मॉलर लोब. सो ऐसा है ना, इसका मीनिंग ये है कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट टू मोर टुवर्ड्स वन साइड.
टू द अदर एटम ना, तो इसलिए ये बिगर लोब एक साइड में बनता है, बट पूरा जीरो एक साइड में नहीं होता, क्योंकि दैट इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन मैटर, तो इसलिए ये स्मॉलर लोब बोलते हैं। मतलब यहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन और here is very small, probability of finding electron maximum over here. ऑर्बिटल का मतलब क्या बोला था मैंने, probability of finding the electron, right? Fifth point, only those orbitals, atomic orbitals are involved in an intermixing which have same energy or nearly same energy. Okay, so subshell should be of the same shell or differ by one shell. मतलब 1s और 2s का नहीं हो, 2s और 2p का मिक्सिंग हो सकता है, 3s 3p 3d का मिक्सिंग हो सकता है. Okay, sometimes there is a mixing of 3d and 4s also because the energy gap is almost negligible. Okay, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ only those atomic orbitals, ये मैंने बताया था तुम लोगों को, AOs मतलब atomic orbital, only those atomic orbitals are involved in intermixing which have nearly same energy. Nearly same energy. Okay, ये important point है यहाँ पे. ठीक है. Now next one, all three types of orbital, that is empty, half filled, fully filled orbitals participate in intermixing, participate in a hybridization. Empty orbitals are involved in a coordinate bond. Fully filled orbitals are involved in a lone pair. So 6 point. Empty, मतलब vacant, half filled or fully filled orbitals are involved in hybridization. Involved in hybridization. Okay. Empty orbitals involved in a coordinate bond. Empty hybrid orbitals corresponds to coordinate bond filled, fully filled hybrid orbitals involved in lone pair. अच्छा पहले ये लिखो, यहाँ तक का पॉइंट्स लिखो, फिर आगे मैं और एक्सप्लेन करता हूँ. हाँ, डोंट वरी, ये हर चीज मैं तुम लोग को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. ये पॉइंट्स को समझना है, उसको अप्लाई करना है हम लोग. हाँ, राइट डाउन.
चलो अभी नेक्स्ट वन, 7th पॉइंट देखो। ये आगे वाले पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ना हम लोगों को ज्योमेट्री पता चलेगा, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पता चलेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन is associated with hybrid orbitals. So hybrid orbitals can form only sigma bond. Okay. Next point. Orientation of hybrid orbitals in a space depend upon type of orbitals and number of orbitals involved in hybridization. Okay. Orientation of hybrid orbitals in space depend upon type of orbitals and number of orbitals, atomic orbitals involved in hybridization. Okay. 9 point. Hybrid orbitals will orient in space in such a way that there must be minimum repulsion. इसलिए देखो ना डेफिनेशन में क्या लिखा है, मैक्सिमम सिमेट्री। मैक्सिमम सिमेट्री का मीनिंग ही ये है कि among the hybrid orbitals there must be minimum repulsion. Okay, hybrid orbitals will orient in space in such a way that repulsion between them is minimum. Repulsion between them is minimum. लिखो, और मैं एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, एक दो एग्जांपल हम लोग करते हैं। ओके,
चलो अभी मैं एग्जाम्पल से कुछ एक्सप्लेन करता हूं। द फर्स्ट हाइब्रिडाइज मतलब कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ये पहले मैं बता देता हूं, फिर हम लोग ये देखते हैं। सो एटॉमिक ऑर्बिटल, so we have atomic orbitals, hybridization, इसके अलावा दूसरा हाइब्रिडाइजेशन नहीं। सो डोंट आस्क मी सर ऐसा क्यों नहीं, लोग पूछते हैं सर ऐसा क्यों नहीं। सो डोंट आस्क सच क्वेश्चन बिकॉज दे आर whatever I am showing you the hybridization, they are tried and tested, proved by experiment. These are not randomized. Okay, ऐसे randomly कोई भी उठा के नहीं बनाया। हाँ, so अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मैंने लिया तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। अगर एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मैंने लिए तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अगर एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स मैंने लिए तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अगर एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल मैंने लिया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं sp3d। एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल तीन ही होते हैं ना, px py pz। ओके, और दो d ऑर्बिटल मैंने लिए तो होता है sp3d2। एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और तीन d ऑर्बिटल अगर मैंने लिए, तीन d ऑर्बिटल तो होता है sp3d3। दैट्स इट। हम लोग के सिलेबस में रादर हम लोग को मुझे उतना इतना ही पता है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। एक और होता है जो जनरली हम लोग इधर यूज नहीं करते, वी यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, डी, एक डी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल एंड टू पी ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं dsp2। बट दिस इज ओनली इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये लिखो। अच्छा, तो मुझे बता सकते हो कितने कितने ऑर्बिटल, मैंने बताया था ना कितने ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स है, दो, एक एस और एक पी ना। सो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, इसका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, राइट डाउन।
यस डन, लिखा ये सबने? हेलो, गुड। तो एक में एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक्चुअल क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, डायग्राम मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ और इसके एग्जांपल्स और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट एसपी हाइब्रिड। अच्छा, एसपी में एस और पी दोनों भी स्मॉल होने चाहिए बिकॉज दे आर ऑर्बिटल। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, अब इसका डेफिनेशन देखो क्या है। इट इज अ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ वन s and one p orbital of an atom, one s and one p orbital of an atom with nearly same energy to form two new orbitals. Okay, to form two new orbitals is called as sp hybridization. Okay, it is a mixing and recasting of one s and one p orbital of an atom to form two new orbitals with same energy and maximum symmetry. ओके, मतलब क्या? ये है s ऑर्बिटल, है ना? दिस इज योर s ऑर्बिटल on one p orbital. See, this is not overlapping, this is mixing. ये है, ये एक s ऑर्बिटल है और ये एक कोई भी px py pz व्हाटएवर, ये दोनों का मिक्सिंग हो गया। मिक्सिंग है, मिक्सिंग याद रखना, इट्स अ मिक्सिंग। ये हो गया मिक्सिंग, इसको बोलते हैं मिक्सिंग। दिस इज कॉल्ड एज इंटरमिक्सिंग। और इंटरमिक्सिंग के बाद मुझे नए ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं और वो न्यू ऑर्बिटल्स कैसे रहेंगे? ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये इसका छोटा लो और इस ऑर्बिटल का छोटा लो, ये हो गया। तो ये जो ऑर्बिटल्स बने हैं नए called as sp hybrid orbital. Now it looks like p orbital but it is not p, देखो थोड़ा ब्रॉड है ना? समझ में आया? Any doubt? Everybody got the point? Okay, ये ड्रॉ करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पूरा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे डालेंगे। फिर मैं तुम लोग को शॉर्टकट की बताऊंगा कि कैसे हम लोग शॉर्ट में मॉलिक्यूल देखने के बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। राइट इट डाउन। थैंक यू वेरी मच। जिनको डाउट है वो मेरे साथ रुको, कंप्लीट करके मीटिंग को लीव करना। अभी मीटिंग को छोड़ना मत, पूरा ड्रॉ करो अच्छे से। नेक्स्ट टाइम से पेंसिल हाथ में रखना, because we have to draw such structures from next lecture onwards. Okay, जिनको डाउट है stay with me, complete the things. Those who don't have a doubt they can leave meeting. Thank you very much.